Hello friends, I am Gaurang Kumar and welcome to another video tutorial Biotech Guide. So today in this video lecture I am going to explain about fermentation media, which is very important topic in fermentation technology. जिसमें हम बात करेंगे first types of fermentation media and second we will discuss composition of fermentation media. So today's video going on very interesting level. Stay tuned with us and enjoying this video lecture. Before we start, let's get some brief overview about fermentation. So fermentation एक metabolic process है जहाँ पर raw materials like sugar और carbohydrates are converted into economically important products like acids, gas and alcohol by using microorganisms. And the process is carried out in an equipment or a vessel is called fermenter. That's why the process is called fermentation. Then fermenter, fermentation media, fermentation organism and optimum condition, these all are required things for a fermentation process. जिसमें से optimum condition like pH, temperature and desirable fermentation media both are very important for obtaining high yield of a product. Basically fermentation media provide करता है substrate for a synthesis of a product और इसी substrate को microorganism catalyze और uptake करके enzyme synthesis करते हैं. Like here we take one example of alcohol fermentation, जिसमें fermentation media में कार्बन सोर्स के तौर पर मोलासिस और fermentation organism के तौर पर Saccharomyces cerevisiae जो yeast है वो यूज़ की जाती हैं. अभी यहाँ Saccharomyces cerevisiae yeast जो कि मोलासिस को अपटेक करके इथेनॉल और गैस प्रोड्यूस करते हैं. So this is the simpler and a brief overview regarding fermentation and fermentation media. Now we come on our topic. First, types of fermentation media. So major three types of fermentation media are there. First is synthetic media, second is complex media and third one is semi-synthetic media. So यहाँ पर first synthetic और second complex media को differences के तौर पर देखेंगे जिससे ये दोनों media easily memorize हो सके. Then we will describe remaining third type of fermentation media, semi-synthetic media. So let's see difference between synthetic and complex media. First synthetic media जो नॉन केमिकल कंपोजिशन दैट मीन्स जो केमिकल यूज हुए हैं उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड और नॉन रहती हैं, whereas in complex media chemical composition is unknown. Second point also correlate with the first point. If media chemical composition is known, so concentration of media we can easily define or measure, whereas in complex media concentration is undefined or not easily measured. Third, then synthetic media is also called as minimal or a chemically defined media, whereas in complex media also called as a crude media or undefined media. Fourth, synthetic media contains pure biochemicals, where complex media contains complex materials like blood, milk, yeast and a beef extract, etc. Next point, synthetic media provide only exact nutrients जो कि required रहते हैं for the organism growth. Whereas in complex media they provide full range of growth factors जो कुछ organism के लिए ही required रहते हैं. Next example of synthetic media is peptone broth, yeast extract and a beef extract. Whereas in complex media nutrient broth or nutrient agar, tryptic soya broth or agar and a blood agar are the example of complex media. At last, 7th point, uses of media. Synthetic media is used in vitro cell culturing of human and animal cell and also used studying nutritional requirement of microorganism and to study many other physiological studies. Whereas in complex media is used to study growth of fast-release bacteria and pathogenic bacteria. Now we will see few similarities of them. Synthetic media and complex media both are allowing growth of microorganism, especially bacteria. Both contain nutrients and other growth factors for microbial growth, and they are in a liquid, semi-solid and solid in a state. Now we will see third type of fermentation media, that is semi-synthetic media. Semi-synthetic media is also largely chemically defined media जिसमें one or more specified components variable यानी कि different रहते हैं in a control composition. That media is known as semi-synthetic media. This type of media are used in a research and to studying particular organism growth. In earlier case, plant, animal
fish and microbial extracts are used to supply vitamins and essential growth factor for a specific organism. Example of semi-synthetic media are potato dextrose agar PDA and corn meal agar CMA. So this is all about of types of fermentation media. Now we will see our second topic, composition of fermentation media. In this topic I covered total 11 components. Let us discuss one by one. First, inorganic nutrients. Inorganic, that means doesn't contain carbon. It contains salt containing anions that are positively charged and cation that are negatively charged. Example like magnesium ion, phosphates and sulfates. These are the example of inorganic nutrients, जिसमें से सल्फेट्स आयंस को यूज किया जाता है to balance crude media. Second component, that is carbon source. Simple or complex carbohydrates are used as a carbon source. Example is different sugars like mannitol, sorbitol, organic acids, fatty acids, proteins and peptides are used as a carbon source. कार्बन सोर्स में अगेन दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज किए जाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसके सोर्सेज में ब्लैक स्ट्रेप मोलासिस, कॉर्न मोलासिस, बीफ मोलासिस एंड हाइड्रोल कॉर्न शुगर मोलासिस are the example of simple carbohydrates. In complex carbohydrates, starch, corn, rice, wheat, potatoes and wood waste, those are sources of complex carbohydrates. Third component, that is nitrogen source. Fermentation process में यूज होने वाले microbes अगर नॉन प्रोटियोलाइटिक, that means they can't produce protease enzyme to break protein, तो उनके लिए नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर यूरिया, एमोनिया एंड नाइट्रेट दिया जाता है. इन अनदर केस माइक्रोब्स अगर प्रोटियोलाइटिक है, दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस प्रोटीएज एंजाइम टू ब्रेक डाउन प्रोटीन, तो उनको नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल दिए जाते हैं, लाइक एज केसिन, सीरियल्स, ग्रेन्स, पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोसाइलेट, सोयाबीन मिल एक्सेट्रा. हियर हाइड्रोसाइलेट is a substrate produced by hydrolysis and mostly protein hydrosylate are used as a nitrogen source. Fourth component of fermentation media, that is growth factor. Most commonly growth factor के तौर पर vitamins, extracts और nutrients को यूज किया जाता है. अगर fermentation process में used media complex media है तो उसमें enough amount of growth factors present रहता है. That's why no extra addition is required. If any lack of vitamins or nutrients, growth factor is added into a media. Example is yeast extract and a beef extract. Fifth component, that is precursor. Precursor crude यानी कि complex constituents और substance हैं जो fermentation process start होने से पहले fermentation media के साथ ही ऐड किया जाता है, जिसके रिजल्ट के तौर पर फाइनल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं रहता है. एग्जाम्पल इज कोबाल्ट क्लोराइड, जो विटामिन B12 के फर्मेंटेशन प्रोसेस में एज ए प्रिकर्सर यूज किया जाता है. सिक्स्थ कंपोनेंट, दैट इज बफर्स. बफर्स जो यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल चेंजेस इन ए pH. कई बार यूज्ड फर्मेंटेशन मीडिया के कंपोनेंट्स ही बफर्स की तरह परफॉर्म होते हैं. एग्जाम्पल इज प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स. दिस थ्री एक्ट एज ए गुड बफर एट अ न्यूट्रल pH ड्यू टू एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेसिक एमिनो ग्रुप. इनऑर्गेनिक बफर्स के तौर पर K2HPO4, KH2PO4 and CaCO3 are used. The cheapest and easily available buffer is CaCO3, calcium carbonate. Seventh component is water. Water is major component of fermentation media, जो pH, dissolved salt and effluent contamination जैसे factors को maintain करता है. Here effluent, that means liquid waste. Mineral water is used in a brewing process. Here, brewing is a process of producing beer in an industrial scale. Eighth component, energy source. Energy जो रिलीज होती है by oxidation of media components और through a light. ज़्यादातर इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक कीमोऑर्गेनोट्रोप जिनके एनर्जी सोर्स में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड एज ए कार्बन सोर्स. Another nutrients and their raw materials described below as an energy source. For sucrose, sugarcane, sugar beet and molasses are the raw material. Then for glucose, corn sugar, starch and cellulose. For lactose, milk. Then for fats, vegetable oil. For starch, maize grains, cereals
And last, hydrocarbon, petroleum fraction. These all are the raw materials used in a media as an energy source. Ninth, vitamin. Mostly biotin or vitamin H and vitamin B7 is used in a fermentation media composition. 10th is phosphate. Phosphate जो माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड और न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए और डीएनए के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट है। फॉस्फेट का अमाउंट डिपेंड रहता है ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट, उनका नेचर एंड फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट पर। एग्जाम्पल इज फॉस्फेटेज एनाफाइटेज। जनरली इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड। लास्ट 11th अदर कंपोनेंट्स, जिसमें वेजिटेबल ऑयल के तौर पर ऑलिव, मेज, कॉटन सीड एंड सोयाबीन ऑयल यूज़ किए जाते हैं। दैन अदर कंपोनेंट्स में एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस्ड फॉर्म को कंट्रोल करते हैं, जिसके एग्जांपल में सिलिकॉन ऑयल, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन यूज़ किए जाते हैं एज अ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। So this is all about of types of fermentation media and its media composition. So here we completed our topic. I hope you enjoying very well and got it very well. Thanks for watching, and if you want to get more and more informative videos lectures regarding the biotech course, so subscribe to my channel and press the bell icon, never miss an updates.